जब हमारी सेल डाउन हो रही होती है तो हम चीज़ें सस्ती कर देते हैं एंड वी सेल इट बिलो आवर कॉस्ट प्राइसेस एज वेल. A person who started an e-commerce store, he's yet to build his audience, he's yet to build his customers, and in that, customer zone or that area, I think Sense and Stories is a very fine example of these days. I mean, like, they are selling out the perfumes at the very cheaper cost. People, in terms of grabbing an initial customer range or a customer, they are just going for a very low price, even at the price that they are just getting it costed at. So does that trick work in the e-commerce, that you sell it up on that costing part, and is it going to be a sustainable model, or is it going to be a worry for a very near future of time? And ELO has gone through that sort of a time zone, or not at all? यार वी हैव बीन प्रॉफिटेबल फ्रॉम डे वन, तो मैं इसमें ये वाली बात तो नहीं करूँगा. हम लोगों ने ये बिल्कुल किए हैं कि जब हमारी सेल डाउन हो रही होती है तो हम चीज़ें सस्ती कर देते हैं एंड वी सेल इट बिलो आवर कॉस्ट प्राइसेस एज वेल. So it's a part of marketing, and I don't think it's sustainable in long term. But if you want to do a short term gain, if you're thinking कि यार मेरा, so for example we have this goal of selling 30% of our inventory every month, कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए का माल पड़ा हुआ तो मैंने 30 लाख रुपए का 30,000 रुपए का बेच के ही जाना है. एंड इफ इट डजंट फॉल तो हम लोगों का अपना है कि हमने ये करके जाना है. एंड इफ यू आर नॉट मीटिंग आवर टारगेट, वी विल रिड्यूस द प्राइस जस्ट टू मीट दैट टारगेट, बिकॉज दैट कीप्स अस इन चेक. हमें वो इन चेक इस तरह रखती है कि यार हमारा कैश फ्लो तो ठीक रहता है ना, आया पैसा, निकला पैसा, माल खरीदा, कैश फ्लो तो पॉजिटिव हम लोगों को होना चाहिए ना. तो फॉर सम स्मॉल टाइम वी कैन डू इट, बट सस्टेनेबल कहाँ से होएगा यार? अगर आप एक चीज़ 100 रुपए की खरीद रहे हो और आप 80 रुपए की बेच रहे हो तो सस्टेनेबल तो हो ही नहीं सकती.